हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के ऊपर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस। प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल्ड, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सो हमें इसमें सेलिंग प्राइस दिया और बोले कि वो डबल हो गए, प्रॉफिट दिया, तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस भी एक्स एंड सेलिंग प्राइस भी वाई। सो तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो इट विल बी वाई माइनस एक्स। सो प्रॉफिट विल बी वाई माइनस एक्स। नाउ वट दे हैव सेड, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल्ड। अगर हमारा ये सेलिंग प्राइस डबल हो गया, दैट इज 2y माइनस एक्स, तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, 3y माइनस एक्स। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 2y माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस एक्स। सो ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2x विच इम्प्लॉयज y इज इक्वल्स टू 2x। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में, y इक्वल्स टू 2s। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सो profit percent is SP minus CP, that is profit upon CP into 100। अब y हमारे पास क्या है, SP, तो SP किसके इक्वल आया है हमारा, फ्रॉम दिस रिलेशन 2CP के इक्वल आया है। तो क्या होगा, 2CP माइनस CP अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CP अपॉन CP इंटू 100। सो दिस गॉट कैंसल्ड एंड द आंसर इज 100%। ही विल गेट द 100% profit if the selling price is doubled and profit is tripled. So B option is the correct option. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है, a vendor bought toffees at 6 for a rupee. How many for a rupee must he sell to gain 20%? Now अब देखो हमें बोला है कि how many rupee must he sell to gain 20%, तो उसको कितना गेन होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 टॉफीज क्या होगा, 100 प्लस 20% ऑफ ₹1। सो उन्होंने क्या पूछा कि ₹1 का कितना पार्ट, दैट इज 120% ऑफ ₹1। सो ये क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 100 इंटू 1 विच इज 6/5 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 टॉफीज इज 6/5 rupees. So what will be the selling price for the, so for 6/5 rupees, 6/5 rupees के लिए कितनी टॉफी सोल्ड की उसने, टॉफी सोल्ड है 6, ही सोल्ड 6 टॉफीज। नाउ फॉर 1 rupee वी हैव टू फाइंड फॉर a rupee। सो फॉर 1 rupee वो कितनी सोल्ड करेगा, टॉफीज सोल्ड इज 6 into 6 upon 5, so that is 5 toffees. So C option is our correct option, that is 5 toffees. Now moving on to the next question. We have the next question is, a shopkeeper expects a gain of 22.5% on his cost price। तो उसका कॉस्ट प्राइस में कितना गेन एक्सपेक्ट कर रहा है, 22.5%। तो ये क्या होगा, 122.5% ओवरऑल गेन है जो उसको मिलेगा ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, सो इफ इन अ वीक हिज सेल वॉज ₹392, उसकी सेल कितनी थी, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 392। वट वॉज हिज प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट परसेंट दिए, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट ऑन CP दिए। सो अब हम तो यहाँ से CP का फॉर्मूला क्या आएगा, CP विल बी इक्वल टू SP अपॉन प्रॉफिट इंटू 100। सो CP क्या आएगा, SP हमारे पास कितना है, 392, प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 122.5% इंटू 100। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम 392 इंटू 100 इंटू 10 divided by 1225. So this goes for 5, 2,
4 5, again 5 20, again 5 4 9, this goes for 7 5 is a 35, 4 carries 6 and 7, 7 8 is a 56. So here it comes 16 into 20, which is 320 rupees. This is the cost price. Now we have to find the profit. So profit is SP minus CP. So SP is 392 and CP is 320. So we got our answer as 72 rupees. So C option is our correct option, that is 72 rupees. Now moving on to the next question. We have next question is Sam purchased 20 dozen of toys at the rate of rupees 375 per dozen. Now 1 dozen equals to 12. 1 dozen equals to 12 numbers or 12 anything which it contained, which is measuring dozens. So per dozen means 12 numbers. Sam purchased 20 dozen of toys. So उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, इसको कॉस्ट प्राइस वो कितने परचेज किया. सो 375 इंटू 20 which is 5 to the 10 15 and 7500 rupees. And similarly he sold each one of them at rupees 33. Now he has sold each one of them, that is he has 20 into 12 dozen items and 20 dozens total. So he sold each of them at rupees 33. So what will be its selling price? 33 into 20 into 12. But it will become 240 into 33. 12 and 7, same 12 and 7, 2 9. So it will become 7920 rupees. What was his percentage profit? Now we have to find the percentage profit, that is profit percent SP minus CP upon CP into 100. So here we have SP 7920 minus 7500 upon 7500 into 100. These 20 got cancelled and here we got 0 to 420 upon 75, which is divided on 5. 5 is a 40 and 5 4 is a 20. 5 1 is a 5 and 25. So this goes on 15 divided by 84 is 15 4 is a 60. 15 5 is a 75. 7 and 9 0 5.15 6 are 90. So our answer came out to be 5.6. So C option is our correct option, that is 5.6. Now moving on to the next question. We have next question is 100 oranges are bought at the rate of rupees 350. 100 oranges are bought at the rate of rupees 350. So cost price of 100 oranges is rupees 350. So cost price of one orange will be 350 upon 100 rupees. Similarly, and sold at the rate of rupees 48 per dozen, that is selling price of 12 oranges is rupees 48. Similarly, selling price of one orange will be 48 divided by 12, which is 4 rupees, and here if we convert it, it will become 3.5 rupees. Now we have to find that whether it is profit or loss and its percentage. Now we have seen that SP is greater than CP, so it is profit. So first we have to find the profit percent. Profit percent will be SP minus CP upon CP into 100. So what is our SP? SP is 4 minus 3.5 upon 3.5 into 100. 0.5 upon 3.5 into 100. This goes for 7 and 100 divided by 7. 7 divided by 100 is 7 1 is 7, 3 and 7 4 is 28. So 2. So our answer came out to be 14.2 upon 7% and its gain. We have the profit. So now by on marking the option, like consider it, here it is written gain and loss. So remember that you have to mark the gain option. So A option is our correct option. Now moving on to the next question. We have A, B, C enter into partnership in the ratio this, this and this. After 4 months, A increases his share 50%. If the total profit at the end of 1 year be rupees 21,600, then B's share will be.
सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये जो रेशियो दी है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज A रेशियो B रेशियो C is 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5. So it will become 7 in 3 into 5 ratio 4 2 into 5 ratio 6 3 into 2. So it will become 15 15 7s are 35 7s are 7 105 ratio 5 2s are 10 40 ratio 3 2s are 6 and 36. So it will go into I guess 4. Firstly, these all the three terms doesn't divide by any one number, so this is are the simplest form of the ratio. So हम क्या मान लेते हैं कि let initial investments जो उन्होंने की है, initial investments be 105x for A, 40x for B and 36x for C. ओके, सो आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 months क्या हुआ है, आफ्टर 4 months पहले ए का शेयर जो था उसमें उसने अगर उसका शेयर x% था तो आफ्टर 4 months उससे अपना शेयर x+50 कर लिया. आफ्टर 4 months उसने अपना शेयर x+50 कर लिया. सो फॉर फर्स्ट 4 months उसकी इन्वेस्टमेंट और अब हम रेशियो कैसे निकालेंगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द टाइम प्लस उसके बाद क्या हुआ, उसका शेयर 50% और बढ़ गया. सो इट विल बिकम 100 + 50 150 दैट इज 100%. अगर उसका शेयर था तो 50% और बढ़ गया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105x विच इज़ द investment, and again for how many period, for 8 months. We are given the total time to be 1 year. पूरे साल का 1 year बोले तो 4 year उसका इतना था, 4 month उसका इतना था, और अब 1 year में टोटल 12 months होते हैं. तो 4 months उसका इतना था, तो बचे कितने months, 8 months. तो 8 months उसने अपना प्रॉफिट, उसने अपना शेयर 50% इंक्रीज कर लिया. सो दिस इज फॉर A रेशियो B रेशियो C. रेशियो फॉर B it will be 40x into 12. Ratio for C it will be 36x into 12. For 1 year, 1 year equals to 12 months. So now we just have to simplify it. So on simplifying, I will get 105 into 4 is 5 4 is 22, 420x plus 1.5 into 105x into 8 ratio. For 80x ratio 36 into 12 is 36 into 12 is 6 to the 12 and 7 6 3 13 432x. So now अब हम इसको further solve करते हैं. 15 8 जा 120, so it will become plus 105x into 12. So we just have to multiply it. 105 into 12 is 10 to into 501 which is 6 to 420x plus 1260x. So ये हमारे पास क्या बन गया, 086. So 1680x रेशियो 480x रेशियो 432x. सो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फॉर दिस विल गो फॉर 4 3 4 पे 4 से स्टार्ट करते हैं. दिस विल गो फॉर 4 4 is 16, 4 2 is x ratio 4 120x ratio 107x. Now this will again go on to the 107. Sorry, this will here it will be 8. Now again it will go on to the 4. So 4 1s are 4 and 4 5s are 20. Ratio 4 3s are 12x ratio 4 2s are 8 to carry 4 7s are 28. So now it will goes on to 3 35. So x also got cancelled. 10 ratio 9. So this is the simplest form of the ratio, 35 ratio 10 ratio 9. Now what we have to find then,
बीज शेयर ऑफ द प्रॉफिट. सो प्रॉफिट हमारे पास क्या है 21,600 एंड वी हैव टू फाइंड द बीज शेयर इन प्रॉफिट. सो बीज शेयर विल बी 10 divided by 35 plus 10 plus 9 of 21,600. So it will become 10 divided by 9, 14, 54 into 21,600. So 2 to the 4 and 2 7s are 14. 2 1s are 2, 0, 8, 0, 0. This will go on to 3, 9, 3, 1, 6, 0, 0, 9, 400. So it becomes 4,000 rupees. So B share is 4,000 rupees here. So D option is the correct option, which is 4,000 rupees. Now moving on to the next question. We have next question is Arun, Kamal and Vinay invested rupees this and this in a business. Arun left after 6 months. If after 8 months there was a gain of rupees 4,005, then what will be the share of Kamal? So basically हम इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं, A रेशियो B रेशियो C, which will be investment into the time period, investment into time period for a particular person. So it will be 8,000 into 6 as the Arun, A for Arun. Sorry, here I will write the name so it will be easy. So A is for Arun's share, Arun's ratio, Kamal's ratio, Vinay's share. So Arun left after 6 months, ratio Kamal invested for total 8 months 4,000 rupees into 8 ratio 8,000 into 8. So these 3 zeros get cancelled. Okay, so 8 6 are 48 ratio 8 4 are 32 ratio. So this 8 also got cancelled simply. So we get 6 ratio 4 ratio 8, which even be converted into simplest form. इसको हम simplest form में convert कर सकते हैं by dividing it with 2, 3 ratio 2 ratio 4. So this is the simplest form of ratio. Now what we have to find? If after 8 months there was a gain of rupees 4,005, profit कितना हुआ rupees 4,005, then what will be the share of Kamal? So Kamal's share will be 2 divided by 3 plus 2 plus 4 into 4,005. So 2 divided by 9 into 4,005. So 9 4s are 36, 4, 9 4s are 36, 4, 9 5s are 45, which is 5 2s are 10, 4 2s are 8, 9, 4 2s are 8, 890 rupees. So A option is the correct option, rupees 890. Now moving on to the next question. We have next question is Simran started a software business by investing rupees 50,000. After 6 months, Nanda joined her with a capital of rupees 80,000. After 3 years, now we have given a total time period for 3 years. So we will convert it into months, which is 3 into 12 is 36 months. What was Simran's share in the profit? Now Simran ratio Nanda. So सिमरन ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए 50,000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स, और उसने स्टार्ट किया मतलब स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किए इनटू 36 मंथ्स के लिए, और नंदा ने उसको 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया. सो शी इन्वेस्टेड फॉर ओनली 30 मंथ्स. उसने कितनी की 80,000 फॉर 30 मंथ्स. सो दिस 40 गेट कैंसल्ड. हियर कैन ऑल्सो बी गेटिंग 12 and 10, again 5 and 6, 5 and 5, 3 and 4. So the simplest form becomes 3 ratio 4. Now we have to find what was the Simran's share. So Simran का share क्या होगा? Simran's share in profit will be 3 divided by 3 plus 4 into the profit, which is 24,500. So 3 divided by 7 in 24500, that is 7 3s are 21 and 3 7 5s are 35. This is a 9 10, that is 10,500 rupees. So D option is the correct option, 10,500 rupees. So ये थे प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.